So yes, hello everyone. Today we'll start the fourth poem of class 9, that is No Men Are Foreign. Okay, as the name suggests, if we talk about No Men Are Foreign, as in this poem, the poet John James Kirkup defines about the people of different country and how do we treat them. So we should not treat the people of different countries as foreigners and all. Okay, let's start with the introduction. He wants to say the title that no men are foreign, it itself means that no men belong to the other country, to the different country, because in general we consider those people as foreigners. The poet wants to say that all men are same, all men are equal. He wants to promote the concept of universal brotherhood. So in this poem, he wants to define and he wants to promote the concept of universal brotherhood. जैसे हम define करते हैं everyone in the world are human being and the people are our brothers and sisters. In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. All people, all men are same. They eat, live, die the same way as we do. Okay. Everyone gets the bounties of the nature like sunshine, air, water, land. In equal measure, we can also say that it is a peace poem. Okay? So it actually gives a message of peace, that we should not fight with each other. We should not consider the countries as rival countries and all. Okay. So let's start with the poem. The very first stanza. Remember, no men are strange, no country foreign. Yeah. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathe like ours. So in the very first line, the poet is saying that no men are strange, that not a single human being is strange. Okay. No country foreign. जिस तरीके से हम define करते हैं that the person, हम normally क्या बोलते हैं, if this person is very black having curly hair, this person belong to Africa, right? This person is very white, belong to some other foreign country. So here the poet is defining, the poet here is stressing on the thing that remember, no men are strange, कोई भी human being जो है वो strange नहीं होता, and no country foreign. Beneath all uniform, a single body breathe like ours. So beneath all uniform, here the poet has used the term uniform. Here uniform has two aspects. First one is the uniform, the military uniform, okay? The uniforms of the officers of different countries. So beneath all uniform, चाहे उन्होंने कोई सी भी uniform पहनी हो, belong to any other country, right? Like if we are living in India, we have some other uniform defined. If some person living in Russia, in Pakistan, they have other uniform defined, right? So beneath all uniform, there is a single body that breathe like ours, ठीक है? उन यूनिफॉर्म्स के अंदर एक सिंगल बॉडी, एक ह्यूमन बीइंग जो है उसकी बॉडी है, जो डेफिनेटली इट ब्रीथ लाइक आर्स. सेकेंड एस्पेक्ट इज व्हाट? द ट्रेडिशनल ड्रेसेस. ओके, सो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हम कंट्रीज के अकॉर्डिंग डिफाइन करें या हम इंडिया के ही बारे में बात करें तो यूनिफॉर्म का सेकेंड एस्पेक्ट यहाँ पे जो डिफाइन कर रखा है दैट इज द ट्रेडिशनल ड्रेसेस. सो इफ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड हमारे यहाँ पे स्टेट वाइज ट्रेडिशंस जो है वो चेंज होता है, स्टेट वाइज ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं. तो इट डज नॉट मीन हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि दिस पर्सन इज महाराष्ट्रियन, राजपूत एंड ऑल, राजस्थानी और बंगाली. येस वी से, बट इस चीज के बेसिस पे हमें उनको जज नहीं करना चाहिए. ओके, so remember, no men are strange, no country foreign. Beneath all uniform, there is a single body that breathe like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. So the land in our brothers walk upon, जिस लैंड पे हमारे ब्रदर्स जो हैं, ब्रदर्स किसको कंसिडर किया है? जो दूसरी कंट्री से डिफाइन कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के लोग हैं. तो जो ब्रदर्स जिस लैंड पे चल रहे हैं वो भी सेम अर्थ ही है. वी ऑल लाई इन द सेम अर्थ. हम सारे लोग जो हैं, पूरा वर्ल्ड जिसको हम डिफाइन करते हैं, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज डिफाइन हो रही हैं, डिफरेंट स्टेट्स डिफाइन हो रहे हैं,
वहां पे तो वी पीपल लिव इन द सेम अर्थ सो इन विच वी ऑल शैल लाई. तो इन चीजों के बेसिस पे हमें अपने आप को या दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, राइट? सो हियर द पोएट वांट्स टू से दिस. लेट मी जस्ट रीड द एक्सप्लेनेशन फॉर यू. आई होप it will be more clear after reading the explanation. In the first line, the poet says that no men are strange and no country is foreign. So he is attempting to remove the boundaries. Okay, he is attempting to remove the borders from the earth which have been erected to separate different countries. हमारे यहाँ पे क्या किया गया है, या definitely borders खड़े कर दिए गए हैं अलग countries को define करने के लिए, अलग countries को separate करने के लिए. तो इस border के बाद में दूसरी कंट्री है, इंडिया है, उस बॉर्डर के बाद में नेपाल है, पाकिस्तान है, ऐसे हम लोगों ने चीजें डिफाइन कर दी है. तो ही इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव दोज बॉर्डर्स. देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन. अगर हम ऐसा कर देते हैं, हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको रिमूव कर देते हैं, देन डेफिनेटली कोई भी कंट्री जो है वो फॉरेन नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो सेम चीज होगी, कहीं पे कोई बॉर्डर्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है. ओके, we will feel every country as our own land when there will be no borders. Everyone will be free to move around. ठीक है? Definitely, right? Next, the poet wants to say that the entire earth is one and all people who live on this earth belong to one human race. Again, he's attempting to prove this thing, and definitely he's trying to say that the entire earth is actually one. और वहाँ पे जो भी सारे लोग रह रहे हैं वो सेम ही है, वो अलग नहीं है. ठीक है? They people belong from a human race. Then he says that inside the uniforms worn by the soldiers of the different country, the human being is the same. Inside all the uniforms, beneath all the uniforms, there is a single human body that breathes like ours. Okay? We are nourished by, actually, God has made all of us in the similar way. All breathe in the same way. We inhale and exhale. Everyone does that. Okay? Then he says that all the soldiers are our brothers. We all walk upon the same mother earth and upon our death shall lie in the grave like everyone else. Okay, so I hope this first paragraph is clear. Here in the very first paragraph, the poet wants to define that, remember, there is no person that is strange and no country that is foreign. Beneath every dress, beneath every uniform, there is a single body that breathes like us. Okay, and we all shall lie in a same earth. Second, they too, aware of sun, air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Again he wants to say that they, यहाँ पे they किसको define किया है, जो हम लोग जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. Here we are talking about those people who belong to other countries. Okay, so they here refer to those people who belong to other country. They too aware of sun, air and water. So every person, चाहे वो हमारी कंट्री का हो, चाहे वो किसी और कंट्री का हो, every person is nourished by the same sun, air and water. Okay, ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में कोई और सन जो है वो राइज होता है, कहीं और जाके कोई और सन होता है. सन तो एक ही है. So they are nourished by, they actually get the bounties of nature. They are nourished by the same sun, air and water, are fed by peaceful harvest and war's long winter starved. Now they are fed by peaceful harvest when, now the thing is here the poet wants to define कि जब peace होती है तब farmers के through जो harvest, मतलब जो हमें crop मिलता है, so they all are fed by those peaceful harvest. Okay, and by war's long winter starved. And कई बारी जब war का timing होता है, when there is no war, okay, there is peace, then everyone can do his or her work. तो farmers के through जो harvest यानी crops हमें मिलता है, everyone is fed by those peaceful harvest. Secondly, कहीं भी ऐसी situation है कि war हो रही है या बहुत ठंडी पड़ी है, जैसे बाहर के countries में हम define करें, तो उस टाइम पे काम करना इस चीज़ की वजह से क्या होता है, war की वजह से. जैसे आप सबको पता है, अगर हम lockdown के बारे में बात करें, this is the present scenario, right, when we had to face it because of COVID. Okay, so तब जब war या ऐसी कोई situation हो जाती है उस टाइम पे, if we are starving then everyone else is also starving. Okay, कोरोना या कोविड जब स्प्रेड हुआ था तब ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ हो रहा है कहीं और नहीं हो रहा. ठीक है, so everyone are fed by peaceful harvest and by war's long winter starved.
Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. They have two hands like ours, okay? They have lines. It's like in their lines we can read a labor not different from us. मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास में 2 हाथ है, किसी और के पास में 3 है. इट इज नॉट द केस. सो ही वॉन्ट्स टू से दिस. हम जिस तरीके से लोगों को फॉरेनर्स कंसिडर करते हैं या स्ट्रेंज कंसिडर करते हैं, दे आर द सेम पीपल लाइक अस विथ सम डेफिनेटली different things, okay, different abilities or disabilities, right? So we all call them foreigners and discriminate them and fight with them also. ठीक है, जिनको हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं हम उनको foreigners बोलते हैं, हम उनको discriminate करते हैं, कई बार ऐसा होता है हम उनके साथ में लड़ते भी हैं. Okay, the poet says that nature has given all the bounties to all people also just like he has given to us. So nature की जो bounties है, मतलब सन, एयर, वाटर एंड लैंड, ये सारी चीजें नेचर ने सब में बराबर बांटी है. जैसी हमें मिली है वैसे ही सबको भी मिली. ओके, एवरीवन गेट्स सनलाइट, एयर, water in equal measure, which means that God does not differentiate between the people from different countries. If the God is not differentiated, then why us? Okay. We all do farming during the time of peace. Peace के टाइम पे हम सब फार्मिंग करते हैं और उससे जो क्रॉप्स जनरेट, मतलब हमें जो हार्वेस्ट मिल रहा है, we are fed by that. Okay, when there is no war, when we live a relaxed life and eat the things given to us by nature, definitely हम एक पीसफुल लाइफ बेयर करते हैं, ठीक है, और हम जो नेचर ने हमें जो चीजें दी हैं उसको एंजॉय करते हैं, राइट? Further, he adds that the way we starve during wars and winter time is the same for those belonging to other countries. मतलब the way, as I explained this to you, the way we starve in winter and in difficult times, जिस तरीके से हम suffer कर रहे हैं वैसे ही हर person करता है. Okay, even they don't get food at that time. So he wants to say that foreigners who belong to another country and we both are same. He wants to say that. He is just stressing on the thing that foreigners who belong to another country and we people are same. ठीक है? We also have what the poet says that even their hands are same as ours. जैसे हमारे hands है वैसे ही उनके भी है. They work very hard just like we do. हम जिस तरीके से काम करते हैं वैसे ही वो भी hard work कर रहे हैं just to earn, मतलब just to give their family a good life. Okay, so ये कहीं पे भी अलग नहीं है. Clear? Let's move on to the next stanza. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. Next he is saying, remember, they have eyes like ours. Obviously, we have 2 eyes and every person who belongs to different country also has 2 eyes. So he is saying again, remember, stressing on the fact that they have eyes like ours that wake or sleep. ठीक है, जब सोते हैं तो बंद हो जाती है, सबकी होती है, और जब उठते हैं तो खुल जाती है. ठीक है, so they people have eyes like ours that wake or sleep and strength that can be won by love. ठीक है, every person has his or her strength, his or her plus or negative points that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. And in every land, ठीक है, इन द होल वर्ल्ड, हम किसी भी कंट्री में जाते हैं वहां पे एवरी पर्सन इज बियरिंग अ कॉमन लाइफ दैट कैन बी रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल, द टाइम टेबल ऑफ एनी अदर पर्सन, ऐसा नहीं है, बट द पीपल आर बियरिंग द सेम लाइफ लाइक अस. दे ईट for their livelihood, they work just to earn and just to give their families a good life. Okay, clear? So here the poet tries to define that if we talk about, matlab it's like the people have eyes like us that wake or sleep like us. God is not differentiating in this thing. Okay, now God has given everything similar. God ने हर कंट्री के हर एक पर्सन को जो चीजें दी हैं, आईज दी हो, हैंड्स दिए हैं, वो एक ही तरीके से दिए हैं, राइट? सो वी शुड रिकॉग्नाइज दिस थिंग कि अगर हम ये चीजें समझ जाते हैं, इफ वी अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, तो वी कैन रिमूव द केस, वी कैन रिमूव द सिनेरियो ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्रिटिसाइज करना एंड ऑल. वी कैन रिमूव द फाइट थिंग, द वॉर्स फ्रॉम आवर लाइफ. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा.
Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray and condemn. Now here in the fourth stanza, the poet wants to say that let us remember, whenever we are told to hate our brothers, ठीक है, brothers as in the people who belong to a different country, and whenever we are told, हमें कौन बोलता है? The leaders. ठीक है. So remember, whenever we are told to hate our brothers by the leaders, now leaders can be in any way. Political sense में हो सकते हैं, political leaders, religious leaders, ठीक है. तो जब भी एक चीज याद रखो, जब भी हमें ये चीज बोली जाती है to hate our brothers, for example, if we are living in India, so हम लोगों ने ऐसा सीखा है, हम लोग शुरू से इस चीजें सोचते हुए या सुनते हुए बड़े हुए हैं, दैट पाकिस्तानीज आर या आर एनिमीज, ठीक है, दे आर एक्चुअली दे आर टेररिस्ट, वहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं एंड ऑल, लेकिन ऐसा नहीं है. ये हमें कौन चीज बोल रहा है? क्योंकि हम बचपन से ऐसा सुनते हुए बड़े हुए हैं. तो चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो या फिर रिलीजियस लीडर्स हो, रिलीजियस लीडर्स एज इन द प्रीस्ट्स एंड ऑल, हम लोगों के यहाँ पे कास्ट्स, ठीक है, ये सारी चीजें डिफाइंड है. तो जब हमें ये चीज बोला जाता है दैट हिंदूज, वी पीपल आर हिंदूज, वी शुड नॉट कम्युनिकेट विद द मुस्लिम्स एंड ऑल, व्हाई दिस इज, ये कौन बोल रहा है या ये कौन बता रहा है? द लीडर्स. तो एक चीज याद रखो, जब भी हमें ये चीज बोली जाती है टू हेट आवर ब्रदर्स, चाहे वो डिफरेंट कंट्री से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो डिफरेंट कंट्री से डिफाइन कर रहे हैं या डिफरेंट रिलीजन से डिफाइन कर रहे हैं या डिफरेंट प्लेस, वट एवर इट इज, ठीक है, कहीं से भी आ रहे हैं. तो वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, it is ourselves that we shall dispose, betray and condemn. So we are doing what? It is just our we are not using our mind, we are just blindly following them. Okay, so it is ourselves that we shall dispose, we are depriving ourselves, we are betraying ourselves, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, and we are condemning. Condemn का मतलब criticizing. Okay, remember, we who take arms against each other, remember it is us only, ठीक है, हम ही हैं, we are taking arms. Arms means the weapons. Okay, so remember, we who takes arms against each other, हम लोगों ने ही एक दूसरे के खिलाफ जो है, ये एक दूसरे के लिए जो है वो हथियार उठा लिए हैं. अब देखो, you can see it in the picture, two people as in यहाँ पे दो different countries के leaders जो है वो खड़े हुए हैं, and they are actually playing with the common people's mind. ठीक है, clear? So we should not do that. अगर हम इन सारी चीजों में ध्यान नहीं दें तो we can actually get free from these things. We can actually ये सारी जो war वाली situation है इससे हम बहुत easily बच के निकल सकते हैं. Let me read the explanation for you. The poet says that we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, to think him as our enemy, and whenever we think someone to be our enemy, then we deprive ourselves. We are just depriving ourselves. We cheat ourselves and we condemn ourselves. We criticize ourselves. हम अपने लोगों को ही criticize कर रहे हैं, ठीक है. Next is, he says that we should stay away from such negativity. We should not consider anyone to be our enemy. हम लोगों को इन सारी negativity से बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए. During a war, both the parties must bear the loss. अब जब भी कोई भी war होता है तो both the parties have to bear the loss. ऐसा तो है नहीं कि एक country जो है या एक party जो है उसका कोई loss होगा ही नहीं. Both the parties have to bear the loss. ठीक है, दोनों ही जगह से किसी न किसी को खोना पड़ता है. तो ये सारी चीजें, it is not in our favor. Okay, and that is why the poet says that war is not in our favor. It is not in our favor. He says that whenever we pick any weapon against someone, we should remember one thing, कि हम अगर एक दूसरे के खिलाफ weapon उठा रहे हैं तो we should remember this thing कि दोनों का ही नुकसान होगा. ठीक है, let's move on to the next stanza and the last stanza. It is the human earth that we defile. ठीक है, actually by doing that, by raising weapons against each other, it is the human earth that we are defiling. Defile का मतलब that we are polluting. हम human earth को ही pollute कर रहे हैं. Why we are polluting it? Because कभी भी अगर war होती है तो our earth is polluted by the bloodshed.
ठीक है, लोग मरते हैं, ह्यूमन बॉडीज जो है वो इधर उधर गिरती है, एंड वो सारा ब्लड जो इधर उधर फैला हुआ है वो किसी न किसी नफरत से फैला हुआ है. दैट्स व्हाई वी आर पॉल्यूटिंग आवर ह्यूमन अर्थ. Our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Now, our hells of fire and the dust and hells of fire as in dust और hells of fire actually है क्या, जो भी हमारी चीज में मतलब जिस भी वजह से वॉर हो रही है, चाहे वो हमारे दिमाग में गंदगी हो या किसी ने कुछ बोला हो या फिर हमारे अंदर का गुस्सा जो हो. hells of fire means हमारे अंदर का गुस्सा है या फिर हमें किसी से दुश्मनी, ये सारी चीजें करके we are just outraging, we are just polluting, violating the purity of our nature. ठीक है, outraging the innocence of air that is everywhere our own. ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं. जब भी एक छोटा सा बेबी जो है वो बॉर्न होता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि कौन मेरा अपना है कौन नहीं है, या मुझे किससे प्यार करना है किससे नफरत करनी है. जब वो बड़ा होता है तब उसको बताया जाता है कि नहीं ये हमारी कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, तब वो चीज क्या है उसके दिमाग में बैठ जाती है. क्लियर? सो इट इज एक्चुअली व्हाट वी आर जस्ट वायलेटिंग द इनोसेंस जो हमारी है, हम उस चीज को वायलेट कर रहे हैं. एंड यहाँ पे इस इनोसेंस के बारे में क्या चीज डिफाइन कर रखी है कि बाय डूइंग दैट, बाय लीडिंग एवरीथिंग एवरी टू द वॉर, वी आर जस्ट डिफाइलिंग, वी आर जस्ट पॉल्यूटिंग our nature and our earth, okay, just because of the bloodshed, the human bodies here and there. Remember, no men are foreign and no country strange. So here the poet ends the poem by reversing the line. First line में उसने क्या लिख रखा था? No men are strange, no country foreign. इसने पोएम को एंड किस तरीके से किया है? रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी पर्सन जो है वो फॉरेनर नहीं है, एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज. ओके, सो इन दिस होल पोएम द पोएट इज एक्चुअली फोकसिंग on the peace thing, that we should not do that, we should not criticize each other, we should not take arms against each other, because if we do that, it ultimately leads to war and it will actually defile, pollute our earth that is our own. Okay, so I hope this is clear to you. Let's move on to the figures of speech, that means the literary devices. First of all, rhyming scheme in the poem. ठीक है, there is no rhyming scheme in the poem. मैंने last poem में भी बताया था, rhyming scheme अगर नहीं होती है तब हम उसको बोलते हैं free verse. So this poem is a free verse, there is no rhyming scheme in the poem. Clear? Next, the literary device, the very first literary device is alliteration. Alliteration is again the repetition of consonant sound. अगर कहीं पे भी consonant sound repeat हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं alliteration. For example, in stanza 1 there वहाँ पे एक लाइन थी, beneath all uniform there is a single body that breathe like us. So beneath all uniform, the single body that breathe. Okay, so there is a repetition of sound B. Wars long winter starved, W sound का repetition हो रहा है यहाँ पे. Okay, next the second figure of speech is metaphor. Metaphor होती क्या है? Metaphor is basically what, whenever we do comparison without using the word like or as. अगर हम कभी भी किसी भी पोएम में comparison कर रहे हैं like और as को यूज करे बिना, उसको बोलते हैं metaphor. तो सबसे पहली चीज यहाँ पे uniforms डिफाइन करी गई है. ठीक है, uniforms जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे uniforms को किस चीज से डिफाइन किया गया है? यूनिफॉर्म्स का मतलब है द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, द ड्रेसेस ऑफ सोल्जर्स और द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ओके, सेकेंडली वॉर्स टाइम, वॉर का जो टाइम है इट हैज बीन कंपेयर्ड टू विंटर सीजन, वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड. ओके, नेक्स्ट देयर इज रेपिटेशन. रेपिटेशन क्या होता है? अगर कहीं पे भी कोई सा भी वर्ड रिपीट हो रहा है या लाइन रिपीट हो रही है उसको बोलते हैं रेपिटेशन. सो यहाँ पे रिमेंबर वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार. सेकेंडली, remember, no men are strange, no country foreign. So this has been repeated, that's why there is repetition. The next figure of speech is enjambment. Now this is new to you. enjambment होता क्या है? सबसे पहले तो ये सुन लो, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ है. ठीक है, enjambment होता है बेटा, अगर कहीं पे भी किसी भी पोएम में कोई भी लाइन जो है वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू, मतलब एक स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन तक कंटिन्यू हो रहा है विदाउट हैविंग एनी पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ द लाइन. ओके,
Now, for example, here in line number 2, beneath all uniform a single body breathes like ours. तो यहाँ पे this is a single statement जो यहाँ जाके खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. तो अगर एक स्टेटमेंट दो या दो से ज्यादा लाइन में कंटिन्यू हो रहा होता है विदाउट हैविंग एनी पंक्चुएशन मार्क एट द एंड, उसको बोलते हैं एंजैबमेंट. The land our brothers walk upon is, again same, is the earth like us, like this. ठीक है, so again enjambment. यहाँ पे enjambment है. Second stanza में भी देखो, they too are aware of sun, air and water, लेकिन यहाँ पे punctuation mark है, तो ये continue मतलब definitely बिना punctuation mark के continue नहीं हो रहा. Next, are fed by peaceful harvest by war's long winter starved. This is enjambment क्योंकि यहाँ पे कोई punctuation mark नहीं है. Their hands are ours and in their lines we read a labor. We read a labor, again enjambment. There is no punctuation mark at the end. Okay, clear? In the next paragraph, remember they have eyes like ours that wake or sleep. Again, there is enjambment. There is no punctuation mark here. ठीक है? And strength that can be won by love. Again, there is enjambment. Okay? In every land is common life that can. Clear? So, I hope enjambment is clear to all of you. Okay? So, enjambment होता क्या है? Enjambment is basically whenever a statement is getting continued in 2 or 3 lines without having any punctuation mark at the end of the line, that is known as enjambment. Okay? So, I hope the poem is clear to you. Thank you.